Welcome to the webinar. I'm glad today, Kabir, you have taken up the hosting thing, and I was loving it because I could hear you, but everything else was stuck. So, why don't we do one thing? Why don't you today start the webinars Very hosting? nice. I would Very love nice. I'm trying to do less because it's so cold here, but okay, nonetheless, We I can't will do this. complain. We are from Ahmedabad. It's not cold. It's quite sunny out here right now. No problem. I will start the webinar today. So Thank you so much. good afternoon, everyone. Have you done all the necessities? वो poll करना है कि वो सब हो गया? Introduction चल रहा था तभी मैं exit हो गई. नहीं, But please it's आप. okay. We don't need a poll today because we are going to keep a very active chat box today. Okay, done. We want Okay. all of our members to be very active today here. Okay, ठीक है. I just got a message from a couple of people on Instagram. So it's 12:03. We'll wait till 12:05. 2 Absolutely. मिनट और रुक जाते हैं. Till then, I just wanted to know if, like, once you guys saw the post of the webinar, what is it that you guys were, what is it that attracted you from that post? What is it that you want to, what is it that you would like to talk about the most today? Like, I know it's get profitable in 2024. So either you could write, what are you guys running? Are you guys running a cloud kitchen, takeaway, restaurant, or okay, you have a cloud kitchen, fantastic. Or if you would want me to talk about anything in specific, how to start a cloud kitchen. Okay, Ishwar, you have not started to a QSR. Okay, fantastic. Flavored milk brand. Oh, what is your flavored milk brand's name, Chintan? Food counter at a mall. Nah, just in planning stage. Got it. Ishwar, if you're in a planning stage, you should check out. Okay. You will. I'll actually tell you in a bit. No, Kabir, not right now. We are going to tell it. We will tell it. Market is super competitive now. Some tips to stay on top of the game. Want to learn more on about marketing? Oh, brilliant! I have a lot to say on this today. I like this running a QSR name called Gujarati Farsan, Mr. Dhokla. अरे पता है गुजराती फरसान मिस्टर ढोकला dude, at least about 15 मैं कितने साल का हूँ 30 साल का हूँ हाँ 15 years ago I used to go for an acting class somewhere in Delhi, and over there it used to be somewhere in Saket, and over there Saket is a place in Delhi which is and over there in some far away there used to be this acting class. It was by that guy called Barry John, who was actually the acting coach for Shah Rukh Khan as well. 15 साल का था. I attended some sort of session there. तो उसके आसपास ना एक दुकान होती थी छोटी सी. It was called Farsan. And after every class, Saturdays and Sundays, this class used to be there. After every class, my dad, me and my younger brother, we used to go to the shop and we used to buy all kinds of things. It was the first time I got introduced to yeah, what are those Snacks? what are those long yellow sticks? Fafras, yes. So they used to sell fafras with this achar. My God, I used to finish the whole packet. So whoever this was, Mr. Dhokla, I want to tell you something. I don't know how much you realize how big an industry this can be. First of all, Gujaratis are bloody everywhere. No offense to any Gujaratis here, but you guys are everywhere. No matter what part of the... It's all right. Carry their food with them. We already all Farsan, which is Gujarati snacks, is big business. Should transform from Mr. Dhokla is good, but you should transform from also doing some sort of FMCG. Check out this this brand on Instagram called VS Money. They are a South Indian brand. They sell filter coffee only, and then they started selling some snacks. Shark Tank पे भी आए थे, but कुछ नहीं करना यार. अब सिंपल अपने गुजराती फरसान लेके पैकेज करो और इंस्टाग्राम पे एड्स चलाओ. इंस्टाग्राम पे एड्स कैसे चलाएं? This we will discuss in another couple of minutes. We can start. I think yes, because बहुत सारे questions are there. Just one second. Can you please? I'm just writing initial questions which I want to talk about. BOGO offers. Surely. If Asa, you can also message Kabir the questions, that would be great. Yeah. With this, let me start today's webinar. Hello, everyone, and welcome to today's webinar, Foodpreneurs webinar by none other than Kabir.
I'm your host, Shivani, and this is our second webinar for 2024. This webinar is filled with a lot of strategies, a lot of ideas, and a very big surprise in the end, which is curated only by Kabir. So make sure you don't miss that out. And with this, I am going to give the stage to Kabir because I know time कम है और हमें बहुत सारी चीजें discuss करनी है. So Kabir, the stage is all yours. I'm going to share your PPT right now. Please do. ठीक है. Usually I always share the PPT myself, but वो problem होने लगता है. So I just want. Then I can't see the chat box properly. Mr. Dokla is going to be an international brand. We are already having inquiries for franchise, but need support on how to scale this business. Currently, we have 3 outlets. Okay, man. We can chat later as well. I hope you can see my screen. I can see your screen. I want to know from everyone else if they can see your screen because that is more important. Can you please give a thumbs up if you can see the screen and we can start the webinar now. Yep. Okay, great. Fantastic. Everyone can see the screen. Mostly everyone, at least. Okay. Shall we begin, Shivani? Absolutely, Kabir. The stage is all yours. Okay. So why are we doing this webinar on get profitable in 2024? It is mostly because Shivani was talking to me about what kind of webinar should we do. And I was like, yeah, dekho, I want to do something which is mostly the pain point of everyone. And I've realized that ki log apna business, food business shuru kar lete, but the biggest problem is that most of you, I don't know about you in specific, but most of the people who I chat with on my Instagram, where I'm usually creating content, are talking to me about that they are not profitable, that they're not making money. Orders aa rahe hain, log khana acha lag raha hai, menu acha hai, sab kuch acha hai, lekin paise nahi ban rahe. So I was like, yaar, ye is pe 100% ek webinar karna zaruri hai. Shivani, can you just shift to the next slide, please? So it is everything that we are going to talk about today is going to be how do we make sure that we get you profitable in this year. And this is mostly focused around the fact about what I will be doing to make sure my restaurants stay profitable or increase profit. So you guys can stick to the same things. First of all, let's talk about some of the trends for 2024. Also, beach mein, if any of you feel like saying anything, please feel free to take write anything about what I'm saying or what you see on the screen in the chat box. The chat box is in front of me. I can keep on answering questions or what I feel relatable as well. So, what are trends for 2024? First of all, for tier 1 and tier 2 cities, only alternate diets. Alternate diets ka matlab hai vegan, gluten-free, lactose-free, diabetes sensitive food. All these things will really take center stage because people are realizing more and more कि यार ये चीज बहुत important है. Health आपको ये बात समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप स्विगी जोमैटो पे बेच रहे हो या फिर अगर आप even if you have a restaurant, you have to understand the people who are coming to you the most, even if you have family crowd, are the people between the ages of 16 to 27, 28 or even 30. These are the people who decide where should we eat today. Even if you say I'm a family restaurant, please understand that in very, very specific scenarios, like only when the child is 7, 8, 9, 10, 12 years old, or it is absolutely a newly married couple, is someone senior deciding, someone in the age bracket of 40 to 50 to 60 is deciding where to eat. Otherwise, mostly the people who are deciding where should we go and eat today are between the ages of 16 to 30, which basically means that if you focus on them, you have to focus on them. Even if you have a family restaurant or a family or any family takeaway or whatever, you have to focus on what the young people, what this age bracket wants, and what this age bracket what this age. Someone says we are running a franchisee, we can't change the menu. You can't change the menu, but you can adapt the menu. Even Haldiram's, even McDonald's adapts their menu from location to location. You can speak to your franchise owner and change the location a little bit, change the menu a little bit. So alternate diets will take center stage. Please also realize 60% of people in this country, in India, are lactose intolerant, which basically means that there is a huge market for people like this. So try to focus on this. And especially for tier 2 cities, there are so many restaurants that I've seen in tier 2 cities who have started healthy restaurants and they are doing so well, even though the food is just about average, because they're the only ones doing healthy food over there. Second, boutique, artisanal, local, make in India is getting very popular, which basically means people have started. I've seen so many restaurants where kids, literally kids,
have started small restaurants, not even small restaurant, micro restaurants, and they are focused on making it boutique, artisan and local. मतलब 6 कवर का रेस्टोरेंट, 8 कवर का रेस्टोरेंट, एक छोटी सी ठेली, बट उस एक छोटी सी ठेली को या वो एक छोटे से रेस्टोरेंट को they have converted it into a complete boutique experience. मतलब even when it is super small, it is super amazing. So it's like in Malviya Nagar in Delhi, I don't know if it still exists, but there used to be this place called litti.in, Litti.in. The size of that shop was probably 10 foot by 10 foot. ठीक है ना? Maybe उससे भी थोड़ा सा छोटा. ठीक है ना? Where it was only enough for one place, for one person to stand, and he has to been there. Great, fantastic. So he used to only sell, अपने घर से बना के लाते थे, वो लिट्टी वहां से उठा के बेचते थे सिर्फ. बट वो इतना अमेजिंग बना रखा था, वो बाहर खड़े होके पैसे गिनता था इतना, और उसने बिहार का पूरा हिस्ट्री लगा रखी थी. वो बाहर जो भी खाना खाता था, लिट्टी खाता था, लिट्टी चोखा खाता था, उससे बात करता था. सो इफ यू आर वट एवर, नो मैटर हु यू आर, प्लीज अंडरस्टैंड, बुटीक, आर्टिसन एंड लोकल अपने आप को बनाने की कोशिश करो. ठीक है ना? मिनी व्लॉग्स आर गेटिंग वेरी पॉपुलर. इफ यू मस्ट हैव सीन इंस्टाग्राम पे, अगर आप देखो कितने सारे लोगों ने शुरू करना चालू कर दिया है जो बेसिक से बेसिक खाना बना रहे हैं, या फिर बेसिक से बेसिक चीजें कर रहे हैं जो एटलीस्ट हमें बेसिक लग रहा है, वो अब इतने पॉपुलर होने लगे हैं. So which is why is because people see a lot of people are seeing a lot of value in small efforts. मतलब but you have to put forward those small efforts. जैसे मैं एक बंदे को फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम पे, वो एक छोटी सी दुकान चलाता है, आई थिंक चंडीगढ़ में, पिज्जाज मोमोज बेचता है, लेकिन वो हर रोज अपने वो हर रोज अपने उसके बारे में लिखता है. एंड द रीजन, समवन सेड हाउ टू कोप विद लॉसेस, this is the reason, this is how you cope with losses. These are the trends that you have to follow. So if you are a tier 1, tier 2 city and you're doing anything like a healthy restaurant, try to focus on alternate diets, or try to include some things in your menu which are alternate diet focused. Boutique, artisan and local, अपनी जगह को boutique, artisan and local बनाने की. In my cafe people are not coming, don't know why I have burgers, pizzas, momos, wrap, shakes. Well, if maybe try something like this, boutique, artisanal, local, अपनी जगह को स्पेशल बनाने की कोशिश करो. उसको कुछ इस तरीके से एक, you have to try and give people an experience which they are not getting, right? And like I said, mini vlogs are getting popular. So if all of you must have Instagram pages, try to do mini vlogs. सब नहीं कर सकते, मुझे पता. कोई लोग बोलेंगे मैं कैमरा शाय हूं, मेरे पास ये टाइम नहीं है, whatever, but कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. This is one of the things that you can do. A brand story, they never die, emotions will connect them to you always. प्लीज अंडरस्टैंड, जितने भी लोग, ये मिनी व्लॉग्स का एक एक्सटेंशन है. जितने कितने सारे ऐसे लोग आपने वो देखा था, डिड यू प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स, डिड यू गाइस सी दिस? सो ब्यूटीफुल, सो व्हाट इज दैट थिंग? So beautiful, just looking like a wow. Did you So guys see that? beautiful, so elegant, just looking like a wow. Yes, sorry, so beautiful, so elegant. Did you guys see it? If you could write yes, no in the chat box, please. कोई रिप्लाई नहीं कर रहा आज. हाँ, yes, okay, yes, everyone has seen it, right? Do you know how much money that woman is making today? ठीक है ना? उसने ना एक गुची का फेक प्रिंट का सूट वो बेच रही थी. ठीक है ना? गुची कॉन्टेक्टेड हर कि आप इस हमारे गुची के ओरिजिनल स्टोर में आइए. शी इज नॉट सेलिंग एनीथिंग अदर देन व्हाट, जो वो लाइक, अगर जैसे लाइक समवन अभी जस्ट सेड कि आई रन अ कैफे विद पिज्जास, मोमोज, शेक्स, बर्गर्स, व्हाटएवर. आप वही बेच रहे हो जो सब बेच रहे हैं खाने में. वो वही बेच रही थी कपड़ों में जो सब बेच रहे हैं. उस लाइन में जहां पर उनकी दुकान है, वहां पर अनगिनत कपड़ों की दुकान है और सब बेच रहे हैं. लेकिन उसने सिर्फ ये किया, शी डेयर्ड टू बी डिफरेंट. इफ she dared to tell her brand story, she dared to tell her own story. So if you will dare to tell your own story, you will dare to become boutique, artisanal and local, and try to tell and try to be more, मतलब अपने brand से emotion attach करोगे, you have a higher chance of success. New cuisines, Mexican. कुछ टाइम पहले तक Mexican was like a failed cuisine. कोई भी Mexican restaurant खोलता था, it used to be not running. But I feel for 2024, because Mexican food is very, very similar to Indian food, it will take center stage. So worth checking out Mexican products. Extensive mocktail menu, natural, fresh, exciting, wild-caught, functional beverages. was इतने, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं ये नहीं हो रहा, या फिर ये हो, but please understand that
अगेन द सेम जनरेशन, वो 16 से 30 की जो जनरेशन है, मैं 30 का हूं तो मे बी नॉट मी, बट द लोअर जनरेशन, दे आर नॉट सो फोकस्ड ऑन अल्कोहल, अल्कोहल अल्कोहल कंजम्पशन। अब आप बोलोगे ये सच नहीं है, मैं देखता हूं सब लोग पीते हैं, हाँ पीते हैं, बट एज अ ट्रेंड, यू गूगल इट, एज अ ट्रेंड अल्कोहल कंजम्पशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन सेंचुरीज इज कमिंग डाउन, इज कमिंग डाउन, 1-2% गिर गया है। वो इसलिए बिकॉज पीपल आर मोर फोकसिंग ऑन हेल्थ। मॉकटेल मेन्यूज विल डू वेरी वेल। एंड ऑल्सो एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट ने मेरे को एक बार बोला था, वो ना दिल्ली के एक रेस्टोरेंट है, वरुण तुल्ली उनका नाम है, वो बहुत सारे ब्रांड्स रन करते हैं, ही इज एक्चुअली अ पेट पूजा, वन ऑफ पेट पूजा's biggest customers as well. ही आई स्पोक टू, मैंने कहा सर आप अपने रेस्टोरेंट के लिए अल्कोहल लाइसेंस क्यों नहीं लेते हो, आप तो पास इतना बढ़िया मार्जिन आएगा। वो मेरे को हमेशा, उनने मेरे को बोला था यार मैं किसी चीज को मैं किसी चीज का इतना महंगा लाइसेंस क्यों लूं जिसको मैं, मतलब जो 100 रुपए की है उसको मैं 400 रुपए का बेच सकता हूँ, जब मैं सेम चीज मॉकटेल्स में कर सकता हूँ, मैं 25 रुपए की बचा बनाकर उसको 150 का बेच सकता हूँ। बट हिम्मत डालनी पड़ेगी। Check out his restaurants, Pot, Yum Yum Cha, Noshi. Go see their beverages. Mocktail menus उनके इतने amazing हैं. He puts in so much effort कि लोग खरीदते हैं. 10-10, 15-15 mocktails वो डालते हैं. But आप imagine how much money he makes on just mocktails. Normal, simple. Please repeat names. Noshi, Noshi, Pot, Pot. Just try Varun Tulli. You'll see all his brands. Yeah, so basically extensive mocktail menus will do very well for 2024. अगर आपके पास मॉकटेल्स नहीं है, कम से कम 15, और प्लीज मेरे को ना ये बात बोलना कि वो मेरे पास मोहितो है या फिर नींबू पानी है, अगर आप मोहितो नींबू पानी बेचना चाह रहे हो तो मैं आज बता रहा हूँ नहीं बिकने वाला है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन जाके 10 चीजें देखनी पड़ेंगी, नए कॉन्सेप्ट ढूंढने पड़ेंगे, ग्लासेस ढूंढने पड़ेंगे, अलग अलग तरह की चीजें ढूंढनी पड़ेंगी, और फिर मॉकटेल्स डालनी पड़ेंगी। देन मे बी यू विल बी एबल टू सेल समथिंग, मतलब देन मे बी यू विल बी एबल टू सेल अ गुड मॉकटेल मेन्यू। यू विल हैव टू पुट इन द रिसर्च। देसी ग्रेन्स, ये मेरा एक पर्सनल फेवरेट है। हमारे इंडिया में इतने सारे अनाज हैं जो इतने सस्ते मिलते हैं, जो बाहर सुपर फूड्स कहलाए जाते हैं। वन इज मिलेट्स, अदर इज कुट्टू का आटा। ये विल टेक सेंटर स्टेज, इनसे काम करना चालू करो। अगर आप एक इंडियन रेस्टोरेंट है, इनको अपने मिलेट खिचड़ी यू कैन ट्राई, कुट्टू की रोटियां यू कैन ट्राई, इन सब चीजों को इस्तेमाल करने की कोशिश करो। We have one main shop in tier 3 city. How can we create a franchise? Sorry, sir. Franchise के लिए we'll have to see later on. But this is not a franchise webinar. Yes, Shivani, we can go on to the next slide, please. Let's talk money. Next slide, please. Okay. This is for all the people who are either no matter what stage of you are in. अगर आपका restaurant already है, पैसे बना रहा है, नहीं बना रहा है, this is one thing which has always helped. ठीक है ना? 2020 February 2020 लॉकडाउन हिट, March 2020 लॉकडाउन हिट, ठीक है ना? My father and my uncle run a brand called Nizam's Kati Kebab in Delhi. जब दुकानें खुलना फिर चालू हुई थी, हमारे पास लोग थोड़े से कम थे, एंड स्टार्टिंग कैपेसिटी मुझ थोड़ा सा मतलब कैपेसिटी थोड़ी कम थी। तो मैंने डैड को बोला, मैंने कहा डैड लेट मी टेक आउट द डेटा। हमने 80-20 रूल फॉलो किया, विच बेसिकली हमने देखा कि हमारा 80% सेल, 80% of our sales were just coming from 20% of our items, and this is true for everyone. You might have 50 item menu, 60 item menu, 80 item menu, but you have to understand that your maximum sale is coming from 20% of the items. Find these 20% items, which is what we did in the lockdown, you know, and we started selling only those. For us, it was the Kathi rolls. And Kathi rolls, maybe we had 15 different Kathi rolls. Usme se we started 6. And we gained back 78 chai walo franchise kyun lena when you can make your own flavors of chai. Oh, I don't know what that means. Anyway, 60-70% of our sales came back from just those 6 products. As 6 ke बाद हमने 8 चालू करे, 10, 12, 15. In some of my outlets, we have never gone back. The amount of costs that we have cut just because we have reduced our menu is insane. So you have to find that. अपना डेटा निकालो। अगर आप लोगों के पास पेट पूजा है, पेट पूजा पे जाओ, या पेट पूजा पे किसी एक कॉल पे जाओ और पेट पूजा से बोलो मुझे डेटा निकाल के दो, मेरे को पिछले 8 महीने का बताओ कि मेरा क्या बिक रहा है।
बहुत ही नॉर्मल सा रिपोर्ट है, ये पेट पूजा पे जनरेट हो जाती है, उसमें आपको दिखेगा कि यार शिट, मेरी जो ये आइटम है 20% आइटम से मेरी 80% सेल आ रही है। कोशिश ये करो कि बाकी आइटम्स को निकालने की कोशिश करो। और मुझे पता है सर, इंग्लिश सॉरी, एंड मुझे पता है लॉट ऑफ यू विल बी स्कैर्ड as we were. You will be scared that, are that one customer of mine who comes just for my chicken do pyaza, but my chicken do pyaza only sells 2 in a week. I can't take it out. You can take it out. Believe me, nothing will happen. Your costs will come down. Your menu becomes very small. Boss, I am not saying you only stick to those items. If you have 50 items on your menu, okay, and you follow the 80-20 rule, I'm not saying only sell those 20% items, but reduce your menu till some extent. At least stop selling the things. There will be so many things in your menu which there will be, you don't understand how it works. Okay, let's say for example, what was in our menu? Like in our menu, maybe there was a keema kaleji, okay, which sells beautifully in our main outlet in CP, but in other outlets it would not sell as much. Keema kaleji is expensive. Now that kaleji needs to be thrown after 2 days. It gets spoiled. So you throw it away. वो बिकता नहीं है तो उसको बेचना, उसको फेंकना पड़ता है. So you will have a lot of things like this. And so when I took off the keema kaleji from the menu for some outlets, I started saving that cost of that kaleji being thrown. You have to start from here. So if you have 100-item menu, and if you remove 20 items also, that is a lot of stress relieved on your people. There is a lot of, for example, a lot of Indian restaurants have missi roti. Hardly missi roti sells. Hardly any. The restaurants are doing very good business. But you have to run trial and do this. Yeah, you have to try it, and believe me, not much will happen. बट मिस्सी रोटी का आटा रोज बनता है, रोज या हर 2 दिन में बनता है, ठीक है ना, तो वो तो आपको फेंकना पड़ेगा, तो फेंकना, दैट इज मनी डाउन द ड्रेन. So how many missi rotis are you selling in a week? If you're just selling 2-3 missi rotis a week, does it even make sense to have missi roti? It does not. So you have to check out your menu, and to reduce your costs, first things first, you have to follow this, because you have to understand that in an industry where profit margins are very low, you have to run a lean, clean machine. You have to reduce your costs, and your costs will only be reduced like this. अब सेकंड पॉइंट, आप किसके गुंडे हो? बॉस, आप कहां के गुंडे हो? आपको यह जानना जरूरी है कि ऐसा कौन सा फूड प्रोडक्ट है जहां के आप गुंडे हो. फॉर एग्जाम्पल, अमर कॉलोनी इन दिल्ली, they actually forget Amar Colony in Delhi, Hyderabad. In Hyderabad, there is Paradise Biryani, or in Lucknow there is Tunde Kababi, right? वो हैदराबाद में बिरयानी के गुंडे हैं पैराडाइज वाले, सबसे ज्यादा बिरयानी बेचते हैं वो, इतना मतलब दे सेल क्रेजी अमाउंट्स ऑफ बिरयानी. बट दैट इज बिकॉज अब और भी चीजें उनके मेन्यू में, आई थिंक करीज भी हैं, अलग अलग चीजें भी हैं, बट बिरयानी उनका, दैट इज, वो बिरयानी के गुंडे हैं. आप किस चीज के गुंडे? यू हैव टू फाइंड दैट प्रोडक्ट. इफ यू वांट टू चार्ज मोर मनी, और if you want to charge more money for a product, you have to make that one product extremely special for yourself. You see, किसी भी रेस्टोरेंट को उठा के देख लो, जिसका एक प्रोडक्ट बहुत फेमस होता है, they start selling that product at a premium, and they can afford to do that. So if you want to make money, if you want to make money, you have to understand that you have to find that one niche for yourself and be able to charge more for that. ठीक है? I'll discuss more of this in just a second, but remove what isn't needed: products, packaging, working hours, and unfortunately people. The products that are not selling, remove them. I know a lot of you will be scared. Try it with 2 products, and you'll see here hardly any people will bother about it. But do we have to sell on low prices in the starting? No, you don't have to sell on low prices in the starting, but most people do, right? Like, अगर आप एक मार्केट एवरेज के हिसाब से पिज्जा बेच रहे हो, ठीक है ना, बट आपका पिज्जा बहुत फेमस हो जाता है, and people start liking your one kind of pizza, right? Then you can eventually start charging more for that same pizza. But you should have to do something different with that. I'll just explain that. It's about creating a USP. I'll talk about that in a second. But remove what isn't needed. So products which are not needed, remove them. Packaging which is not needed, I'll explain this.
for our brand, we used to have customized everything right before the lockdown. Customized straws, customized what is that called here? Soft mouth freshener, customized mouth freshener packaging, napkins, toothpicks, everything, every packaging was customized. What we did is slowly we realized that, and this is for our North Indian brand, which is a mass brand. So we realized that if isme, it's not a luxury restaurant. So for a mass brand, we have to curtail our costs. So we started pushing down and we started seeing what are the packaging elements which are not absolutely necessary. One thing which I realized is, जो मुझे बहुत बाद में realize हुआ, which is that we were buying, it will be small things like what quality of napkin are you buying? A lot of people are buying, let's say, a quality of napkin जहाँ पे one packet is 28 rupees or 29 rupees. You know, we shifted to a napkin which is 22 rupees. And you know why I did that? You'll be like, Kabir, why you are now giving bad quality napkin? I'm not giving bad quality napkin compared to the food, that compared to the price range that we are activating in, because I saw the napkins that McDonald's is giving. And then I realized McDonald's gives single ply tissues which cost them maybe 14 or 15 rupees a packet. उनके quantities पे तो और कम पड़ता होगा. But when I started realizing this, I started fixing this, that what are things that my customers will not completely be bothered about, and I started changing those things. तो आपको अपनी पैकेजिंग में ध्यान देना पड़ेगा कि इस चीज को हटा सकते हैं, इस चीज को हम जेनेरिक खरीद सकते हैं, इस चीज को कस्टमाइज करने की जरूरत नहीं है, इस चीज की क्वालिटी हम थोड़ी सी कम कर सकते हैं, या इस चीज को हमें 3 कलर्स में प्रिंट करना जरूरी नहीं है, हम इसके नॉर्मल व्हाइट बॉक्सेस भी ले सकते हैं. यू हैव टू सी दोस थिंग्स. Working hours. Again, this is something I have not done yet, but I have noticed there is a restaurant of mine which runs from 12 o'clock in the morning to 11:30 at night. Okay. Earlier, it used to run from 11:30 to 11:30. Then I shifted it to 12 to 11:30. And now I'm thinking to actually start from 12:30. Okay. Because I realized that my first customer ideally comes in 90% of the times at 1 p.m. only. 12 से 1 के बजे बीच में मतलब 5% लोग आते हैं, ठीक है ना, और वो भी rarely आते हैं. On 90-95% of the days नहीं आते हैं. So I can save. I've already saved half an hour from 11:30 to 12. Now I'll save another 12 to 12:30. If I save another half an hour, my staff comes in at 12:30. I've saved 1 full hour of operations. I've saved that's 1 extra hour my staff gets to rest. That is 1 less hour of electricity costs, and I can save on a lot of more things in that 1 hour, or I can do a lot more in that 1 hour. Okay, so this is something also that you need to see कि working hours आपके truly कितने हैं. But be careful with this. This has to come with a lot of research. Okay. And unfortunately, people, but people, you have to see, do you truly need the amount of people that you have? A lot, some time back, there was someone who was working with us for 45 years as a cashier. As a cashier, his salary had become about 75,000. Doing the job of a person who I can pay about 18 to 20,000 rupees. 75,000 we were paying him. Love the man. He has given us so many years of his life, but he did not. Are you guys still here? The chat mein zyada kuch ho nahi raha, so I'm just checking. If you could just send me an emoji, say something, anything at all. Great, fantastic. Okay, you can understand me all okay so far? Okay, great. Yes, fantastic. So, yes. So, should we increase the price of the best-selling product to increase net profit? Should we increase the price of the best-selling product to increase net profit? Yes, 100%. Till some extent, yes, you should. But only if you have reached a point where it has truly become a USP for you. Anyway, so, yeah, you know, this cashier's salary had become 75,000 rupees. Now, full respect for him. You know, I call him uncle because उनने मेरे को बचपन से देखा है, मैं उनकी गोद में खेला है. But at some point of time, I had to realize that I am paying a cashier 75,000 rupees. We did not throw him out. Okay. But the day he retired, I actually felt, thank God. Okay. उसमें कुछ हद तक हमारी भी गलती थी. पुराना जमाना था, उस टाइम पे नहीं होता था, but
What you have to do is, अगर किसी की सैलरी बढ़ रही है तो you have to make sure कि उनका स्किल सेट भी बढ़ रहा है. बहुत टाइम इंडियन रेस्टोरेंट्स में ये होता है कि आप लोग, हम सैलरियां हर महीने 10%, हर साल 10% तो बढ़ा देते हैं, लेकिन क्या उनका स्किल सेट बढ़ा है? क्या उनने और चीजें करना चालू किया है? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल बढ़ा है? ये बढ़ना बहुत जरूरी है. अगर इफ दैट इज नॉट हैपनिंग, देन द सैलरी इंक्रीज आफ्टर सम टाइम विल नॉट बी जस्टिफाइड. After a certain time, they will start, like maybe after 3-4 years, they will enter a salary bracket where you will be paying them the same salary for the job that they no, you will be paying them more salary for a job that, for the same job that they were doing 3 years ago or 4 years ago, that they are doing today itself. That is where the battery starts to, I mean, the graph starts to go down. So you have to look at people as well. See the people. I'm not just saying fire the people that you that you see that you don't need, या फिर इनकी सैलरी बहुत बड़ी है, नहीं, but start inculcating a process that salaries will only be increased if your responsibility and skill set is also increased side by side. Shivani, can you go on to the next slide, please? This is what I was talking about. आप कहाँ के गुंडे हो? USP. मैं ना literally हर webinar, Shivani can tell you this, or anyone who has seen any sort of my content can tell you this. अगर मैं कोई content piece डालता हूँ तो उसके caption में या उसकी video में या फिर webinar में एक slide में मैं हमेशा USP की बात करता हूँ. Everyone, 181 of you here today, I'm promising you, you can leave this webinar after this one slide. This is all you need to make a successful restaurant. That this is all that you need to make it profitable. सिर्फ एक यही चाहिए. अगर आपको, if you want to charge more for less, you have to build a USP. If you want people to pay for experience, you have to build a USP. You know that guy Salt Bay, that Instagram guy, वो जो ऐसे नमक फेंकता है, जो भी थोड़ा टाइम पहले बहुत viral sensation हो गया था. You know that guy who does this with his food at his restaurant Nusrat, okay, in Dubai and the Middle East. He charges 8,000 rupees for a 250-gram portion of lamb. Okay, 8,000 rupees. अगर आप बोलोगे कि वो कन्वर्जन है, कुछ नहीं, नहीं, कन्वर्जन के हिसाब से भी that is an insane price. आप जाके डालो नुसरत prices, you will see so many articles of people saying कि फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज 800 रुपए, 1,000 रुपए की फ्रेंच फ्राइज है, ठीक है ना. $1,000 for a steak. That is there are some steaks which are like वो gold plated है, उसको छोड़ के भी this is जो मैं बता रहा हूँ ना, 8,000 rupees for a 250-gram lamb. This is sauce नहीं है, कोई साइड में ब्रेड नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ स्टेक, लैम्ब स्टेक ग्रिल होके 250 ग्राम का आ जाता है. जस्ट बाय द वे, अगर आप फिगर आउट करने की कोशिश करो कि 250 ग्राम कितना होता है, तो एक पोर्शन, आप जो चिकन टिक्का का एक प्लेट बेचते हो, उसमें एक टिक्के का ग्राम 35 से 40 ग्राम होता है. हम 6 से 8 पीस बेचते हैं, तो एक चिकन टिक्के की पोर्शन, एक पनीर टिक्का का पोर्शन वो 8,000 रुपए का बेचता है, सिर्फ इसलिए बिकॉज उसने अपने लिए एक यूएसपी क्रिएट कर लिया. ठीक है ना, दैट्स इट. वो ये नमक गिरना, ठीक है ना. A lot of people who go there also say that the food is also not as great. I am not here to comment on that. I am simply saying that you have to create your USP. और ये USP बनाना, a lot of people say कि कैसे बनाए USP. Well, just stick till the end of the webinar. I have a hack for you for this. I will tell you that there is a way that I can tell you to create your USP successfully. But this is the single most important thing. अगर आपको किसी भी रेस्टोरेंट के धंधे में पैसे बनाने हैं, तो you need a USP for your restaurant. I joined so late. Please send me a link to the recorded video after finishing seminar. Petpooja does this. They upload. Yeah, there you go. Okay, great, fantastic. Shivani, can you move on to the next slide, please? Okay, before I go on to this, ये marketing का थोड़ा सा हो गया. Please ये बात समझ लेना कि अभी जो मैंने चीजें बोली है, ऐसे बढ़ाया है, अगर आप एक रेस्टोरेंट को सारी चीजें उस रेस्टोरेंट में जाते हैं, किया जाता है, या फिर जहां पे उनको कोई
Oh, Shivani left. It's okay. Yeah, she'll just start the screen. I'll also take a break. Yes. तो these दूसरी चीजें इफेक्ट करती है आपका हाउ पीपल आर ग्रीटेड एट द डोर, how people are made to feel makes a very big difference. ये सब चीजें एक रेस्टोरेंट को प्रॉफिटेबल बनाता है. So you have to focus on these things. Okay, use Instagram. ओके, द फर्स्ट रूल इज कंटेंट. तो आपको किसी ना तरीके का कंटेंट तो क्रिएट करना जरूरी है ही है. अगर आप इफ यू गो वी हैड आई हैड डन अ वेबिनार विद पेटपूजा ऑन मार्केटिंग. इट इज अवेलेबल ऑन YouTube. यू कैन गो एंड चेक इट आउट. once you can go and see it. उसमें I have explained a lot about how you can create content, but कुछ हद तक की वीडियोस तो आपको बनानी पड़ेंगी ही पड़ेंगी. एक चीज मैं सिंपली बता देता हूं, डरना मत कंटेंट बनाने में. कुछ हद तक की वीडियोस भी अगर आप बना लोगे ना, आपका किचन जैसा भी दिखता हो, आप कुछ भी करते हो, आप खुद कैसे भी दिखते हो, कैसे भी बोलते हो, आप बनाना चालू करो. बस वीडियो डालना चालू करो. अगर आप एक गिव मी योर फोन. अगर आप एक कैशियर भी हो, मतलब अगर आप सिर्फ गल्ले पे बैठते हो पूरे दिन, तो अपने गल्ले अपना इंस्टाग्राम चालू करो, अपना कैमरा चालू करके बोलो आज मेरी 20,000 रुपए की सेल हुई है. 20,000 रुपए की सेल में से 5,000 रुपए खर्चा हो गया, और आज ये बंटी काम पर नहीं आया, और आज ये शॉन्टी का पैर टूट गया, और आज ये पनीर वाला आया था. ये अपनी कहानी बताओ. दिस that's all you need to do. If you can just make sure that you create content which is around your story, बस वो बहुत है. कैसी भी वीडियो कुछ वो डालना चालू करो. तो पहला रूल तो वो है, ठीक है ना. फिर उसके बाद डायरेक्ट ऑर्डर्स अगर आपको जनरेट करने, क्लाउड किचन, इफ यू वांट टू डायरेक्ट ऑर्डर्स, इंस्टाग्राम. आई टेल यू, डोंट वरी, आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि इंस्टाग्राम पे पोस्ट करो. you have to run ads, and how to run ads I will give you. I'm telling there is मतलब that is a very long, give me my pen. That is a very long thing, but give me another paper. That is a very long thing, but there is a video that I have uploaded somewhere which I will just tell you about. This way you can do it yourself. You don't have to hire any agency. You don't have to get any marketing person. आप खुद से अपने ads run कर सकते हो. And I'm not talking about just the normal boosted ads on Zomato, on Instagram. I'll show you proper ads. If you want more dine-in customers, you want more reservations. Imagine if you do one thing. Imagine if you अगर अपने रेस्टोरेंट में आप, जैसे ये मिस्टर ढोकला है जो गुजराती फरसान बेचते हैं, ठीक है ना. इमेजिन करो कि वो हफ्ते के एक दिन एक इवेंट चालू करे, ठीक है ना, कि यार मैं थर्सडेज को सारा ढोकला 50% डिस्काउंट पे बेचूंगा, ठीक है ना. प्लीज शेयर योर मार्केटिंग वीडियो लिंक. यार जस्ट आस्क पेटपूजा फॉर इट, दिल टेल यू. थर्सडेज को मैं ढोकला 50% डिस्काउंट पे बेचूंगा. एंड देन ही स्टार्ट्स वन एड कि यार 50% डिस्काउंट पे अवेलेबल ओनली ऑन थर्सडेज प्लीज. एंड देन यू स्टार्ट एन एड ऑन इंस्टाग्राम. 2 people, 3 people, 4 people will come. Just but the cost of that ad versus the people who will come there and make a bill will be nothing. I will tell you how to do this. Just give me a couple of minutes and I'll tell you. Even if you are selling sauces, अपने रेस्टोरेंट की ग्रेवीज, करीज, चटनी, सॉसेज, जैसे कि अभी फरसान वाले हैं, अगर वो अपना फरसान बेचना भी चालू करे, ठीक है ना. अगर कोई नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट है तो वो मखाने, पापड़, ये सब बेचना चालू करे. आप इंस्टाग्राम से बेचना चालू कर सकते हो. ये VS मनी जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप उनको देखो, दे आर डूइंग lakhs or maybe a crores worth of business now, just selling one thing. They started selling one thing, filter coffee. वो भी कहीं और से खरीद के पैकेज करके वो आगे बेच रहे थे. Later on they started selling banana chips. सिर्फ just that. But if you can just understand the art of Instagram, you can do a lot more for your restaurant and become far more profitable rather than just selling जो खाना जो आप बेच रहे हो. We are going to celebrate Dhokla festival in this February with discount, sharing taste of happiness with our Dhoklas and other farsan. Fantastic. So when you do this Dhokla festival, please make sure you create one small ad and run it on Instagram, and please send me what is the performance of that ad later onwards. Don't be shy to show your life. This is just the point of creating content on Instagram. अपनी बारे में बोलना मत. जैसे मैं अभी स्टार्टिंग में बोला था ना, the trends for 2024, अगर आप Instagram खोलोगे ना तो आपको देखेंगे बहुत सारे लोग की मार्केटिंग सिर्फ होगी कि उनके दिन में क्या हो रहा है. Because as
as social media becomes bigger and bigger, people are going more into their homes, work from home, social media, इन सब चीजों की वजह से how to gain followers, ये जो अभी किसी ने लिखा है ना, ये this is how you gain followers. सोशल मीडिया की वजह से हम मोर एंड मोर अपने घरों में घुसते जा रहे हैं. पीपल आर क्रेविंग कनेक्शन. प्लीज एक सेकंड के लिए मेरी बात को समझने की कोशिश करो. आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग क्रैप. People crave connection. People crave to see human emotion. So the more human emotion you can show in your brands, in your brand story, in your Instagram content, people will get attracted to that more. ठीक है ना. अगर आप लोगों ने वो देखा था अंकित बयानपुरिया, वो जो बॉडी बिल्डर है जो इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस हो गए हैं, मोदी जी के साथ वीडियो भी बनाई है उन्होंने. यस नो मे बी प्लीज कमेंट्स में अगर आप बता सकें, मतलब ये सॉरी चैट में अगर आप बता सकें. यस, राम राम सारे ने सपाटे मारो. फॉर द पीपल हु आर सेइंग नो, ही इज अ बॉडी बिल्डर हु started creating vlogs. ठीक है ना, यू कैन चेक इट अप. हिज नेम इज अंकित बयानपुरिया. ठीक है ना. उनके हर वीडियो पे मिलियंस ऑफ व्यूज है. एंड ही डिड दिस क्या है, 100-day चैलेंज, 75 hard, sorry, 75 hard challenge he did, which is this this challenge that he did, and he posted every day for 75 days. और उनने बेसिक वीडियोस डाली है ना. उनकी वीडियो में कोई बहुत एडिटिंग है ना कुछ ऐसा है. उनने बस जाकर तसल्ली से अपनी कहानी के बारे में बोला है. अपनी बोला है कि मैं ये करता था, मैं वो करता था, और लोगों ने देख इतना प्यार करना चालू कर दिया that he is huge. He used to be a Zomato delivery boy. वो किसी एक गांव में रहते हैं, हरियाणा के आई थिंक गांव में रहते हैं. बट आई एम जस्ट सेइंग कि आप भी तो ये कर सकते हो, आप भी तो ये दिखा सकते हो, कोशिश करो. बट मैं पहले से बता रहा हूं, मुश्किल है. कंसिस्टेंसी जरूरी है. करना पड़ेगा 3 महीने, और आएंगे कुछ 1000 व्यू, 600 व्यू, 200 व्यू, 4 व्यू आएंगे. बट वो दिन आएगा जब आप भी फटोगे, और उसके बाद ही आप इंस्टाग्राम को इस्तेमाल करना चालू कर पाओगे. बट आप 200, 400, 300, 500, 800 फॉलोअर भी आ जाए, उसके बाद आप इंस्टाग्राम के एड्स चालू कर सकते हो. आई विल टेल यू हाउ. जस्ट गिव मी अ minute. Shivani, can you move on to the next? Or the 32 active Zomato. अरे can you guys see the screen? Okay. ठीक है, मतलब 75% हो गया. ठीक है ना. कितना बचा? 25%. 25% में आपको रेंट निकालना है, आपको सैलरी निकालनी है, आपको मिसलेनियस खर्चे निकालने हैं, आपको प्रॉफिट भी निकालना है. क्या ये पॉसिबल लग रहा है? यस नो ही बता दो आप. डू यू क्या ये लग रहा है कि ये सस्टेनेबल बिजनेस है? और मैं कुछ गलत कह रहा हूं, लाइक यू कैन टेल मी कि कभी गलत है, ये आंकड़े गलत है. क्या लग रहा है कि इसमें से पैसे बनेंगे? कभी नहीं बनेंगे बॉस, कभी नहीं बनेंगे. दी ओनली वन, ये जो एड्स टू, आई इंक्लूडेड एड्स इन एग्रीगेटर, तभी मैंने 38% लिखा है. ठीक है ना. व्हाट अबाउट ऑपरेशन कॉस्ट? एग्जैक्टली 25% मार्जिन है आपके पास सारे ऑपरेशन कॉस्ट निकालने के लिए. रेंट, सैलरीज, मिसलेनियस खर्चा, कुछ टूट गया, बिजली वाले को बुला लिया. ठीक है ना. इट इज बेस्ट टू स्टार्ट योर ओन डिलीवरी? एब्सोल्युटली नॉट. यू विल नेवर बी एबल टू गेन इट. डोमिनोज, बॉस डोमिनोज बाप है डिलीवरी का. दे आर किंग्स ऑफ डिलीवरी, and they are having a tough time getting people to get to getting people to call them directly, or get food delivered from their app. They are the only one of the only brands in the entire country who only generate orders on Swiggy and Zomato. वो अभी भी mostly खुद deliver कर, but they are the only brands, but उनके बहुत सारे outlets के लिए Swiggy Zomato deliver करता है. Eventually they will have to move as well.
यू अपनी खुद की डिलीवरी तो आप छोड़ दो, हो ही नहीं पाएगा आपसे, ठीक है ना, अनलेस एंड अनटिल कि आप लोग बहुत टाइम से कोई करते हुए आ रहा है और वो बदला नहीं है, सिर्फ वो कर सकते हैं, ठीक है ना। नया खोल के खुद की डिलीवरी करना मतलब इट्स लाइक गोइंग अगेंस्ट द वाटर्स, तो यू हैव टू फिगर, don't worry, there is a way. The only way is a lean machine. You have to become a lean machine, which basically means 32% फूड कॉस्ट में आपको सेव करके 2-3%, ओ गॉड। Hi, Kabir. I'm so sorry. There's some problem going on with it. I'm just sharing the screen. No, sorry. I know. I'm sorry that I also look that irritated. It's only because my flow gets broken. I'm not as irritated on you. I understand. It's normal. It's absolutely fine. यार इसमें चालू कर दो मैं। Yeah, if you can also continue, that would be easier. मेरे में आपका वो PPT बार लोड ऑफ हो रहा है। कोई नहीं, कंटिन्यू विदाउट स्क्रीन। नहीं यार, एक सेकंड, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। ये कैन यू गाइस सी नाउ? You guys might be able to see my screen. Yeah, Kabir, we can see your screen. कोई नहीं, कोई नहीं। दिख रहा है सब? दिख रहा है ना? हाँ हाँ, ठीक है ना। तो सो हाउ डू यू हाउ डू यू मेक मनी, हाउ डू यू मेक मनी इन दिस? ओके, तो आपको आपके फूड कॉस्ट से 2-3% शेव ऑफ करने पड़ेंगे, ठीक है ना। कोई तरीका नहीं है, करना पड़ेगा। यू विल हैव टू फिगर आउट अ वे टू रिड्यूस योर फूड कॉस्ट बाय 2-3%। तो 3% वहां बच गया। पैकेजिंग, ठीक है भाई, जो पैकेजिंग है, पैकेजिंग अगर आप एक क्लाउड किचन हो तो पैकेजिंग में स्पेंड करना बनता है। पैकेजिंग आपकी एम्बियंस है तो पैकेजिंग में 5% डालना बनता ही बनता है, डालने जाने दो। एग्रीगेटर, एग्रीगेटर्स में 38% जा रहे हैं, ये भी 2-3% यहां से शेव ऑफ करना पड़ेगा। कैसे? डिस्काउंट हल्का सा कम करके, एड्स हल्के से कम करके, हल्के से डिस्काउंट, हल्के से एड्स कम करके 2-3% यहां निकलना पड़ेगा। कोशिश करते हैं कि यहाँ पे 2% निकल जाए, ठीक है ना। फिर उसका जो बचा हुआ 25% है, उसमें सैलरीज, रेंट, मिसेलेनियस, इन सब चीजों से आपको 2-3% और निकालना पड़ेगा। मानते 3% आपने और निकाल दिया। 3-2-5, 5-3-8, 8% बचता है, और यही बचता है। अगर आप एक आउटलेट चलाओगे तो आपको 8-9% बचेगा। इससे ऊपर बचना बहुत मतलब मुश्किल है, मैं बता रहा हूं, वो भी हो सकता है, बट उसमें ये मुश्किल कहानी है। तो आपको जितनी लीन मशीन आप कर सकते हो उतना आपके लिए बढ़िया है, ठीक है ना। तो उसके लिए नो सर, व्हाट अबाउट डिस्काउंटिंग? आई हैव एडेड डिस्काउंटिंग बॉस। ये जो 38% मैंने एग्रीगेटर कॉस्ट निकाली है, इसमें मैंने मार्केटिंग और डिस्काउंटिंग दोनों साथ में डाल रखी है, ठीक है ना। तो आपको अपने हिसाब से थोड़ा सा मतलब यू विल हैव टू मेक श्योर कि आप अपने सारे कॉस्ट एकदम कम करके रखो। तो आप अगर आप एक क्लाउड किचन हो, आप जितने अपने आप को घटिया जगह में आप ले सकते हो, मतलब ऑफ कोर्स कीपिंग इन माइंड कि आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो आपके पास आसपास रहे, आप जितना रेंट कम कर सकते हो वो सही है आपके लिए। अगर आप 5,000 रुपए बचा सकते हो तो बचाओ उसको, ठीक है ना, वो सब आपको करना पड़ेगा। ओके, multiple outlets as a cloud kitchen, guys, I'm telling you today, please take it from me in written, I've worked with so many cloud kitchens. If you truly want to make a lot of money when it comes to cloud kitchen, you will have to do multiple outlets. 2-3 आउटलेट जब आप करोगे तो ये जो बाकी सारे कॉस्ट्स हैं ये और कम होना चालू हो जाएंगे। पैकेजिंग जो आपको 5% पड़ रही है, ये 4.5, 4, 3.5% हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप बहुत सारी पैकेजिंग एक साथ खरीदोगे। तो इट रियली डजंट सिट एट 38%। मैं बोलते रहता हूं, आप बताओ व्हाट यू थिंक इट सिट्स एट, मैं उस हिसाब से निकाल लूंगा। बट पैकेजिंग आपकी 3, 3.5, 4% हो जाएगी। ये भी बात सच है कि आप अगर स्विगी और जोमेटो के साथ, आई डोंट नो इफ यू गाइस नो दिस, अगर आपके 2-3 आउटलेट हो जाए तो वो आपकी परसेंटेज भी 1-2% कम कर देते हैं।
तो 1-2% आपकी वहां पे कम हो जाएगा, ठीक है। सैलरीज, अगर आप अगर आप पे एक जगह पे आपको 5 लोगों की जरूरत है, अगर आप 3 आउटलेट करते हो तो आपको 15 लोगों की नहीं जरूरत, आपको 12 लोगों की जरूरत होगी, क्योंकि आपको हर जगह बफर लेने की जरूरत नहीं है ना। जहां पे जो आउटलेट अगर कम सेल कर रहा है उस दिन आप 2 बंदे रख सकते हो वहां पर, या 3 बंदे रख सकते हो वहां पर। ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं इसको। द इकोनॉमीज ऑफ स्केल जितना जितना चालू होगा, उतना ज्यादा आपका क्लाउड किचन पैसे बनाएगा। So that is the only way. You will have to do eventually 2-3 outreach to eventually make money. Eventual price hike, आप अपनी यूएसपी बना लो, आप अपनी स्टैंडिंग बना लो, आपके ऑर्डर्स जनरेट होना चालू हो जाएं, फिर जाके आप प्राइस थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपके पास अब यूएसपी भी है एक। इसलिए मैंने कहा था कि ये सारा इस पूरे पागलपन में अगर पैसा बनाना है तो यूएसपी सबसे जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है वो चीज। तो इवेंचुअली आप प्राइस हाइक बाद में कर सकते हो, डिस्काउंट्स कम कर सकते हो, एड्स कम कर सकते हो। मैं एक और बात बताता हूं, अगर जोमेटो पे आप एक जोमेटो स्विगी पे एक पॉइंट टाइम पे जाके अगर आप एड्स बंद कर दो ना तो कुछ नहीं होता है। मैंने बहुत बारी किया है, 6-6 महीने के लिए मैं एड्स चलाता हूँ, फिर 3 महीने एड्स बंद कर देता हूँ, कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। थोड़ी सी सेल गिरती है, 5-7% बचती है, लेकिन मेरे जो एड में पैसे बचते हैं उसमें बहुत मजा आ जाता है, ठीक है। विदाउट यूएसपी नथिंग विल हैपन। Now, Shivani, just one sec. Actually, just let it be. Sorry, I have the slide. Um, I will quickly tell you. Sorry, guys. I know it's getting a little bit late, but will finish in another 10 minutes. I will quickly tell you one story. I cannot name the CEO, but a couple of weeks back, I had a meeting with the CEO of one of the 2 companies, Zomato and Swiggy. इन दोनों में से किसी एक का, मैं नाम नहीं ले सकता उनका, पर इनमें से एक के साथ मेरी एक मीटिंग थी और मैंने उनको पूछा था, मैंने कहा सर, क्या आपको विश्वास है कि लोग पैसा बना सकते हैं स्विगी जोमेटो पर? और अगर आपको लगता है, या फिर अगर आप बनाओगे तो आप कैसे करोगे? एंड द नंबर 1 थिंग दैट ही सेड इज कि अगर आपको इन पोर्टल्स, मेरे पोर्टल या जोमैटो या दूसरे पोर्टल पे पैसा बनाना है, तो द ओनली वे टू डू इट इसकी प्रोडक्ट में इतना दम होना चाहिए कि रिपीट रेट बढ़े। दैट इज इट, दैट इज इट। और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो है रिपीट रेट। दैट्स इट। The only thing important is repeat rate. If you have a USP, अगर आप एक पिज्जा बेच रहे हो और वो पिज्जा सब बेच रहे हैं, तो आपके पास रिपीट रेट नहीं आने वाला है, बिकॉज लोग आपके पास सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप डिस्काउंट दे रहे हो या फिर आप नए हो। अगर आप एक ऐसा पिज्जा बेच रहे हो जो अलग है, कुछ टाइम पहले जो मैं पेट पूजा के एक वेबिनार में आए थे, जो who was selling a घी रोस्ट पिज्जा, आई डोंट नो इफ ही इज हियर टुडे, घी रोस्ट पिज्जा, वो इतना बढ़िया बिकता था उनका पिज्जा कि वो पिज्जा का अब वो प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं, वो रिपीट रेट बढ़ा सकते हैं, और रिपीट रेट बढ़ाने के बाद ही वो पैसे बना सकते हैं। दैट इज इट। Ajinkya, thank you so much, man. You are very, very sweet. I'm going to take a screenshot of that. इतने बढ़िया बढ़िया कमेंट्स है। ओके, जल्दी से लास्ट में खत्म करते हैं। ऑल्टरनेट रेवेन्यूज, ये सिर्फ बस देख लो, ऑल्टरनेट रेवेन्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने अपना रेस्टोरेंट शुरू किया था तो मैं भी ये करता था यार, हर टाइप की केटरिंग्स करनी पड़ती है। मैंने लोगों के घर में जाके खुद अपने हाथों से सर्व किया है, चिकन टिक्के बनाए हैं। केटरिंग्स बहुत बढ़िया बिजनेस है, थोड़ा सा कम, बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती, ठीक ठाक केटरिंग का सेटअप डाल लो, केटरिंग चालू करो। ऑल्टरनेट रेवेन्यूज बिग सोर्स। मील बॉक्सेस फॉर ऑफिसेज, ये सिर्फ उनके लिए जो फाइट बहुत मार सकते हैं भाई। मैंने कभी नहीं किया, मैंने हमेशा से करना था, लेकिन मैं बहुत लेजी निकला। मैं जा सकता था, लॉयर ऑफिसेज बहुत है मेरे रेस्टोरेंट के आसपास, स्टार्टिंग में मैं कभी नहीं गया उनके पास। जाओ, पैम्फलेट बांटो, उनको बोलो अपना मील बॉक्सेस दो। जो लोग बहुत भयंकर फाइट मार सकते हैं सिर्फ उनके लिए मील बॉक्सेस। Selling sauces and dips, ये Instagram के लिए है। I'll just tell you, don't worry, I've not forgotten. USP and Instagram, the 2 things which will make you money. I will just tell you how to do in complete detail, not in this webinar. You can go and access it later. Kids parties, big business. मैंने इस साल 3 बच्चों की पार्टीज करी है अपने एक रेस्टोरेंट में, दिल्ली में एक रेस्टोरेंट, टर्की प्रोजेक्ट। इट इज अ सांग्रिया बार। Mondays
3 to 6 Monday Tuesday 3 to 6 बस इसी टाइम पे हम किड्स पार्टीज अलाउ करते हैं बिकॉज किड्स अदरवाइज रेस्टोरेंट के ब्रांड के लिए सही नहीं है बट बेस्ट मार्जिन क्योंकि बच्चे खाते नहीं है और प्राइसिंग अच्छी जाती है ट्राई द डबल ब्रांड शॉप वन शॉप मॉडल बेसिकली कि आप कोशिश ये कर सकते हो कि अगर आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हो ये दिल्ली में होता है दैट यू आर just take a screenshot of this someone called Daryl Mendes has messaged I can't read the message too long but just see it please आप अगर एक दुकान चला रहे हो और उसका रेंट 1 लाख रुपए है दिल्ली में बहुत सारे लोगों ने ये किया है गेट समवन एल्स ऑन बोर्ड एक ही दुकान में 2 ब्रांड चलाओ रीच आउट टू समवन बोल यार तू एक ब्रांड चला मैं एक ब्रांड चलाता हूँ थियोब्रमा नाम की जो केक कंपनी है दे हैव टाइड अप विद निरुलाज उनके अब साथ साथ में आउटलेट खुलते हैं एक ही आउटलेट में थियोब्रमा भी है और निरुलाज भी है अब ये सिर्फ बड़े आउटलेट नहीं कर सकते छोटे आउटलेट भी कर सकते हैं अगर आप किसी को जानते हो जो रेस्टोरेंट खोलना चाहता है उसको बोलना यार तू आके आधी दुकान तू ले लेना या फिर अपना एक काउंटर लगा ले या फिर कुछ ऐसा कर ले ये चीजें बहुत काम आती है यू कैन रियली शेयर द टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस you can really pull down your rents or अपने overheads sell yourself so this is an Instagram thing which basically means कि build your own brand however this is I'll just leave it at that अगर आप अपना खुद का ब्रांड बनाने की कोशिश करेंगे अपने आप के बारे में बात करना चालू करेंगे इंस्टाग्राम पर अपने आप को दिमाग में रखते हुए क्योंकि लोग आप देखते हैं ना कि एक पब्लिक कंपनी का शेयर प्राइस कब सबसे ज्यादा गिरता है जब उनका कोई नामी सीईओ छोड़कर चले जाता है क्योंकि सीईओ के अराउंड दुनिया बनती है ठीक है ना तो आप अपने अराउंड अपना बिजनेस बनाएंगे तो ज्यादा आपको और दैट यू विल बी एबल टू रीच आउट टू मोर पीपल लॉट मोर पीपल कनेक्ट विद यू एंड दैट्स अबाउट इट सो इफ यू हैव ऑल मेड इट टिल हियर यू विल आई वांट टू लेट यू नो आई नो आप लोग बोलोगे कि यार ये भी अपने पैसे कमाने हैं Petpooja does not know this, so I've not told Shivani this yet. But the truth is that I am going to be stopping to create content very soon. Because I need to move on to other things. जब मैंने ये कंटेंट बनाना शुरू किया था तो मैंने अपनी प्रोफाइल को पर्सनल से प्रोफेशनल में चेंज इसलिए किया था क्योंकि मेरे को इंस्टाग्राम पे नहीं रहना था तो मैंने कहा था यार सिर्फ बिजनेस प्रोफाइल रखेंगे 2-3 बारी वीडियोस बनाई और वो थोड़ी ज्यादा अच्छी चल गई बिकॉज ऑफ ऑल योर लव तो फिर मैंने रियलाइज किया कि नहीं कबीर अब तो नहीं छोड़ सकते इंस्टाग्राम थोड़ा टाइम ये करना पड़ेगा you have to give back the love so to all the love that you guys have given me over the past couple of months I have created a course and this course is called How to Restaurant and Cloud Kitchen in 120 minutes. It has how to create a USP, how to find the right location, how to market yourself, how to brand yourself, how to market, how to create proper marketing, everything. I have created 2 videos with a guy who has 8 years of Zoom मेरे YouTube चैनल वो चेक कर सकते हो create a USP on that code and because it's basically all the questions that you have asked me over so many messages I put in and answered in that course. You can use the coupon here today. I'm so sorry. I know a lot of people have said that you know कि मैं already खरीद चुका हूँ. You can go on to the Asta, just put that link please. She'll just put a link in the comments in the chat box. You can go and use the coupon Petpooja. P screen पर है. If you use this, you'll get a 500 rupees discount today. This is the most discount, but it is only for today. I'm sorry, मेरे को बहुत बुरा लगता है करते हुए बहुत ही cheap लगता है कि यो only for today discount है, but पैसे तो मैंने भी बनाने हैं तो सिर्फ आज के लिए ये डिस्काउंट है आप जाके खरीद सकते हो आई गारंटी यू that everything that you need to make your restaurant successful is inside this course. If you don't like it, there is no refund option, but if you don't like it, if you send me an email saying Kabir बहुत ही बकवास कोर्स था 1 रुपए की वैल्यू नहीं मिली, I will refund your money to you. But I hate it
to see people shut their restaurants and their restaurants shut down. So if you, and that is why I put together this course, ताकि जो मैं अपनी तरफ से कर सकता हूँ वो इस course में है. Go and use it. You will have more than enough. Everything that you will need to make your restaurant profitable is inside this course. Thank you very much. We can do anything else. We can take any questions if you have now. Thank you so much, Kabir. First of all, great webinar. Superb webinar. And क्योंकि इतने questions आ रहे हैं, I think we should quickly start taking up the questions right now. जी, जैसे सही लगे. Also, before that, for those, don't worry, we'll be sharing all the links, especially the course link. I have seen the course. It's a must watch. Please, please, please go check it out if you are planning to start a restaurant. बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बोला they are planning to start, scale, and also they are trying to find the USP. This course is it. So with this, Kabir, आप question लेना चाहते हैं या फिर should I start sending? Whatever, जैसे आपको सही लगे. एक जन ने इडली नमक के बारे में पूछा था. I would love to start with that actually. Because he kept sending me again and again. If you would want to take that question up. What? Why बताओ. we are fascinated by Idli Nama going from cloud kitchen to dine-in. The cloud kitchen we own is in severe losses. We realize the change we require. मैं आपको send भी कर रही हूँ साथ में, so you can also read it at the same time. We realize the change we require to come in front of our clients to make amazing sales. Do you think it's a good idea to do than be profitable? मैंने same question आपको डाला भी है वहाँ पर. We realize the change we require to come in front of our clients to make amazing sales. यार बिल्कुल भी नहीं, प्लीज. अब बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं. एक just give me 1 second. नहीं यार, बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि वो प्रॉब्लम ये आ रही है कि मुझे ना रेस्टोरेंट खोलने की जरूरत है, लोग मुझे देख नहीं पा रहे हैं. बट ऐसा नहीं है. आपने क्लाउड किचन इसलिए खोला है बिकॉज आपके पास शायद से बजट कम था, या फिर आपको किसी ने बोला कि यार ये दिस इज अ लीन वे टू सेल फूड. देयर इज नो प्रॉब्लम. Like I said, the only way to make money is build a USP, market yourself for at least 8-10 months a year, eventually build down, reduce your ads, reduce your ad spend, reduce your marketing budget, and you will eventually Instagram ads. कबीर चुग मेरा YouTube चैनल है, फ्री वीडियो है, फ्री में डाल दिया हूँ, वो कोर्स से कनेक्टेड है. ठीक है ना. अगर आप कोर्स में करोगे तो कोर्स में कैसा चैप्टर आता है मार्केटिंग से कनेक्टेड एक वीडियो मैंने YouTube पर डाल रखी है, जिसमें मैंने एक अवेश भाई के साथ जाके मैंने पूरा इंस्टाग्राम पे कैसे अपना आप एड चला सकते हो खुद से. कोई किसी एजेंसी के पास जाओगे ना तो वो 30-35-40 हजार रुपए चार्ज कर लेते हैं. ठीक है. अब खुद जाके आप ये कर सकते हो. ज्यादा कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है. 10-15 मिनट खर्चोगे तो सीख जाओगे. Do you have any insight about food business in tier 3 cities? बिल्कुल. Tier 3 cities में the food that runs is what is basic खाना. क्योंकि tier 3 सिटी में ना यूजुअली प्रॉब्लम ये होती है कि खाना साफ ही नहीं मिलता, खाना कंसिस्टेंटली अच्छा ही नहीं मिलता, खाना ढंग की जगह में ही नहीं मिलता, खाना अच्छा ही नहीं मिलता. तो टियर 3 सिटीज के लिए अगर आप सिर्फ बेसिक खाना अच्छे प्राइस पर ठीक ठाक लोकेशन में प्रोवाइड करोगे तो इवन दैट विल डू वेरी वेल. Question for Kabir: could you share your hurdles when you switched from cloud kitchen to dine-in for Idli Nama and other brands? Wait, dude, can you just check? Someone said website is not responding. The cloud, just check please. Kabir, also the coupon code and they're not getting some options. Can you ask her to check that? हाँ नहीं, just there is a coupon code आता है वहाँ पे, जो coupon code में आप P पूजा डालो. Just check please. Asta will just tell you guys. She's just checking. 2 मिनट देना. ठीक है ना. तो सी यार मैं सच बताऊं तो इडली नामा में स्टार्टिंग में बहुत मजे आए. लाइक मतलब ओ माय गॉड इंसैनिटी. ठीक है ना. बट मैं आई एम नॉट सम कंटेंट क्रिएटर जो आपको सिर्फ बोलेगा कि समवन कॉल्ड अभिषेक चौधरी जस्ट परचेज द कूपन कोड इज वर्किंग. तो कि आई एम जस्ट टेलिंग कि हाँ सिर्फ अच्छा ही हुआ मेरे लिए. बॉस अभी पिछले 3-4 महीने से बैंड बजी पड़ी है. ठीक है ना. एकदम बैंड बजी पड़ी है. सेल ऐसी भयानक गिरी और हम थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं.
ठीक है ना. आई हैव अ पार्टनर विथ मी इन इडली नामा, रोहित भाई. ही इज वर्किंग हिज हार्ट एंड सोल एवरी डे टू पुश सेल्स. तो द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही आती है दैट यू हैव टू सेपरेट योरसेल्फ. अपने आप को मैं सपने, इट्स ऑल वर्किंग है, द लिंक इज वर्किंग, द कूपन कोड इज आल्सो वर्किंग. यू हैव टू सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम एवरीवन. अगर आप अपने आप को सेपरेट कैसे करो, वही आपको ढूंढना जरूरी है. सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है, क्लाउड किचन में या डाइन इन में. तो अभी मेरे ख्याल से जिस मार्केट में हम हैं, वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ कंपटीशन, तो थोड़ा सा हमें स्ट्रगल कर रहे हैं. बट आई थिंक वी आर कमिंग अप विद अ कपल ऑफ न्यू मोर थिंग्स. तो मैं रोज फाइट कर रहा हूँ. एवरी डे वी आर फाइटिंग to come up with newer things. We're trying to do a new seafood menu. We're trying to introduce appams. Um, we're trying to include more new, we're trying to include lunch combos. Fight मार रहे हैं यार रोज. बस यही है कि रोज सुबह उठ के fight मारना जरूरी है. You have to try something new. It's all about that. In this era of entrepreneurship, all you have to do is when you get up, you make sure that you promise yourself. कि मेरे को वो ग्राफ दिखाना, मेरा ग्राफ ये रहा, कि you have to try, get up and try something new. I want to show you guys something. Okay, this is a graph sheet that I have. Okay, इसमें ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बने हुए. These are the list of restaurants and things that I am running and the things that I am going to try for them. ये जो सारी चीजें है ना, ये देखिए, ये सारी चीजें, ये टर्की प्रोजेक्ट का है. ठीक है, टर्की प्रोजेक्ट. इसमें क्या लिखा है? कोल्ड सैंडविचेस, पास्ता मेन्यू, सैलेड मेन्यू. ये 3 नए मेन्यू मेरे को भी निकालने हैं. ठीक है ना. और प्रॉफिटेबल रेस्टोरेंट है वो, तसल्ली से प्रॉफिटेबल रेस्टोरेंट है टर्की प्रोजेक्ट. ठीक है ना. लेकिन फिर भी मैंने ये लिखे हुए हैं. अब मैं कोल्ड सैंडविचेस ट्राई करूंगा, क्योंकि मेरे को समर्स में मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ऑफिस गोइंग पीपल होते हैं ना, बहुत सारे यंग लोग खाना घर से लाते नहीं है, या फिर दिल्ली के बाहर से यहाँ पे आके रहते हैं और फिर लंच के टाइम कुछ ना कुछ खाने के लिए ढूंढते होंगे, लॉयर्स, आर्किटेक्ट्स, और उनको बैठ के शाही पनीर और रोटी नहीं खाना. तो कोल्ड सैंडविचेस is something that I want to try. पास्ता मेन्यू, मेरे को अपने पास्तास बहुत अच्छे लगते हैं, तो आई वांट टू ट्राई मोर पास्तास. सैलेड का मेन्यू मेरे को बनाना है, बिकॉज हेल्दी फूड बहुत राइस पे है, तो मेरे को एक हेल्दी फूड बनाना है. ऑर्डरिंग मेरे को सॉर्ट आउट करनी है. एवरी डे आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर माय ऑर्डरिंग इज इवन मोर. आई एम वर्किंग विद पेटपूजा ओनली टू मेक श्योर दैट माय इन्वेंटरी एंड माय ऑर्डरिंग इज मोर सीमलेस, ताकि मैं और थोड़े से अपने खर्चे कम कर सकूं. इंडियन इटालियन मेन्यू, आई एम वर्किंग ऑन एन इंडियन इटालियन मेन्यू. ठीक है, मैं चाहता हूं कि इंडियन इटालियन मेन्यू को भी फ्यूजन की 2-3 चीजें निकालूं, ताकि शायद से अभी मेरे पास ऑलरेडी किसी ने मेरे से पूछा कि आपकी क्या यूएसपी है. आप जाके देखिए, सॉर्बे सांग्रियाज है. ठीक है ना. इट इज कॉल्ड सॉर्बे सांग्रियाज. गो एंड सी द इंस्टाग्राम पेज ऑफ टर्की प्रोजेक्ट ऑन इंस्टाग्राम. यू विल सी दीज सॉर्बे सांग्रियाज आर नॉट सोल्ड एनीवेयर एल्स. पीपल कम बैक फॉर देम अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन. दैट इज व्हाट कीप्स ऑन गेटिंग पीपल टू अस. ठीक है ना. विद दैट वन यूएसपी, दैट इज आवर यूएसपी. दैट वन यूएसपी हैज मैनेज्ड टू मेक श्योर कि साला बारिश हो रही हो, कि गर्मी हो रही हो ज्यादा, कि ठंड हो रही हो, लोग हमारे पास फिर भी आते हैं. फर्क नहीं पड़ता कि रिपब्लिक डे है, चलो ड्राई डे में तो फर्क पड़ता है, बट और कुछ और है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट लोग फिर भी आते हैं बिकॉज यूएसपी है, बिकॉज वो चीज उनको और कहीं नहीं मिलेगी. ठीक है. सो मेक दिस फॉर योरसेल्फ. Make this for yourself, make this for your business, make this for your life. You can actually, for entrepreneurs, you can make this for your life, because में बहुत सारी चीजें मैंने ऐसे भी ऐड कर रखी है. Like there's a personal list also, there's a friends and family list also. Basically, I make sure that I get up every day and I try to do something new for my business. We'll take one more question because my throat is gone now. Once again, yesterday itself I increased my prices in my menu. After 2 years, I'm confused how my customers may react. Will sales go down? How did you face the response of customers when you did? Nothing will happen as long as you have increased properly. अगर आपने 10 से 15% इंक्रीज किया है, कुछ नहीं होने वाला है. लिख कर ले लो, खुद सोचो. जब आप आखिरी बारी गए थे कोई भी रेस्टोरेंट में, तो आपने कब अपना बिल प्रॉपरली पढ़ा था कि ओ 300, क्या आपको याद है कि बटर चिकन कितने का है? मोटा मोटा याद है कि 400-450 रुपए का होगा या 500-600 रुपए का होगा? कोई नहीं देखता है. ठीक है ना. चाय की टपरी पर भी नहीं देखते हैं, नमकीन भेलपूरी वाले पे भी नहीं देखते हैं, मोमोज वाले पर भी नहीं देखते हैं. ठीक है ना. मेरे जो मोमो वाला है वो 10-15 रुपए ऐसे ही बढ़ाते रहता है हर 3-4 महीने. ठीक है भाई, बढ़ा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. मैं कभी कभी तो मेरे को रियलाइज भी नहीं होता. ठीक है ना. अब ये नहीं कि आपको ये मत बोलेगा हाँ कबीर भाई तुम तो पैसा वाले हो, ऐसा कुछ नहीं. कोई नहीं, किसी को फर्क नहीं पड़ता है.
जो चाय बेच रहा है, अगर वो कल अपनी चाय को 10 से 15 रुपए पे ले जाए, तो ऐसे कोई बहुत सेल उसकी गिर नहीं जाएगी। बट हाँ, अगर उसकी चाय में यूएसपी नहीं है तो उसकी सेल गिरेगी, 100% उसकी सेल गिरेगी। आपको अपनी पहले यूएसपी, यू हैव टू क्रिएट योर यूएसपी फर्स्ट। इफ योर यूएसपी इज क्रिएटेड, 1 second, please check, I'm not getting option coupon code, it is giving discount, which on the I can't put ओनली नाउ हटा दिया ना। हाँ ठीक है, वो सर एक कूपन को, एक नया कूपन कोड अप्लाई हो रहा था, वो मैंने हटा दिया, अब आप जाके डालिए, आ जाएगा, अब कूपन कोड लग जाएगा। सो या, तो अगर इफ यू, तो अगर वो चाय की टपरी में कोई अलग कुछ नहीं कर रहा होगा वो, जैसे फॉर एग्जांपल, आई डोंट नो इफ यू गाइस नो दिस, गो चेक आउट दिस इंस्टाग्राम पे, एक यूट्यूब पे एक बंदा है, क्या है वो चाय की टपरी, इस गाय इन पुणे यार, क्या नाम है वो, कट गायब, डॉली की चाय, थैंक यू, डॉली की चाय। वो उल्टे फुल्टे हरकतों से करता है, अपनी चाय बनाता है, ठीक है ना, वो उसकी यूएसपी है। वो कल, अब पता नहीं कितनी रुपए की है, नागपुर में, सॉरी नॉट इन पुणे, वो कल अपनी चाय का प्राइस 15 से 30 रुपए भी कर देना, तो भी लोग उसके पास, एक्चुअली आप जवाब दे दो, डू यू थिंक अगर वो 15 से 30 रुपए कर दे, क्या फिर भी लोग उसके पास जाएंगे चाय पीने? You tell me, you only tell me कि एब्सोल्युटली यस, 100% जाएंगे, बिकॉज वो चाय के लिए जा ही नहीं रहे हैं, वो डॉली के लिए जा रहे हैं। डॉली अपनी खुद की यूएसपी है, सो दैट इज ऑल दैट इज, his footfall will drop drastically. That's मतलब that's your perspective. Sure, if you think it will, I don't think it will drop. कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। थोड़ा तो you can increase your prices, no problem, keeping in mind that you have a USP, keeping in mind that you have a repeat rate, and repeat rate will only come from one thing, USP. And USP you can learn how to make on the course, how to cloud kitchen and restaurant in 120 minutes. The link is already been given. Asta, please link डाल दो, coupon code already चालू है, this is the maximum discount I'm ever going to do, 500 rupees off है, 2599 का है, it gives it to you for 2000, 2100. This is, I'm never going to do more than this, and it's only valid for today. Thank you very much, it was very nice meeting you guys. Thank you so much, Kabir. Amazing Q&A round and a webinar. Please, I know you've been talking a lot, so you can also drink No, some I'm good. water. Okay, perfect. It is my pleasure. So much love, so much nice things I got. It is, how can this be bad? It is a pleasure If you to. have any ending note for all our audience members, would you like to have that or say that, please? Just two things. One is, guys, that when I said that I'm going to stop creating content, it is simply because I want to go and do something. I want to go something new. I want to go do something new, right? And it will. The reason I create this course is because I wanted to make sure that I answer all your and all your questions. You know, after having given so much responsibility, so I wanted to make sure that I give back. So this course has everything for you guys. And eventually, I feel like the only way that you will make money in the restaurant business is by focusing on things which are not directly related to money. So just remember that कि जितना आप एक रेस्टोरेंट में वो चीजें करोगे जो पैसों से अटैच्ड नहीं है, उतना आपका रेस्टोरेंट ज्यादा सक्सेसफुल होगा। इसका मतलब आप गेस्ट के लिए, गेस्ट के एक्सपीरियंस के लिए और अच्छी चीजें करोगे, गेस्ट की क्वालिटी बढ़ाने के लिए और अच्छी चीजें करोगे, अपने रेस्टोरेंट के एम्बियंस को बढ़ाने के लिए जितनी और चीजें करोगे, उतनी सेल ज्यादा बढ़ती है। बिकॉज अगर आप कई अगर कोई आपसे पूछे, अगर कभी कभी बुरा लगे आप लोगों को कि यार मैं क्या बिजनेस चलाता हूँ, इतना मुश्किल होती है मेरे को रेस्टोरेंट चलाने में, इतने टफ मार्जिन है, तो लेट मी टेल यू समथिंग, यू आर नॉट रनिंग अ रेस्टोरेंट, व्हाट यू आर रनिंग इज अ प्लेस वेयर लाइफ हैपेंस। थिंक अबाउट इट, नेक्स्ट टाइम व्हेन समवन, अगर कोई बोलता है कि आज मेरा बर्थडे है, तो क्या कहता है? चल भाई मैं आज तेरे को शराब पिलाता हूँ, भाई आज प्रमोशन मिला, क्या चल भाई आज भेलपूरी खिलाता हूँ तेरे को मैं, लेट्स गो आउट एंड सेलिब्रेट, भाई तेरा मूड खराब है, चल बाहर जाके खाना खाते हैं। Everything we do in our life happens at a restaurant. All celebrations, all mood upliftments. Think of yourself like that. The more you think of yourself like that, even for cloud kitchens, please understand that when someone has a good day, they order good food. The more you focus on making that experience better, the better your brands will do. Thank you very much for all this love. I will most probably be a little bit gayab for a while.
but I think everything that I had to give to the Petpooja community and to all the people who do follow me, I've already given. There'll be one more course which will come out, which is how to increase your sales on Zomato and Swiggy. That will be a sasta one, but that will come without me creating any content on Instagram. All the best, guys. मैं कभी दुबई जा रहे हैं one guy said. नहीं यार मैं दुबई नहीं जा रहा हूँ मैं बस अपने I want to do something new बस वही है. अच्छा guys एक there's just one thing, whoever who is going to buy the course, I want to इसके बाद I want to create an ad about people giving feedback from the course. So if you could send me your feedback. The feedback is, the email is on the course. आपको एक email जो आएगा वहां से, it will be foreverwip@gmail.com. I'll just type it also. उसमें अगर आप, if you could send your feedback, it will help me to tell more people about the course. No pressure, but your call. We do put it because we will share it with our entire community about the course and things. So definitely we'll be sharing that, and we'll encourage everyone to give you a very good feedback and an honest feedback about everything. No, honest feedback. Honest. Yes, a very honest feedback. Honest feedback. Thank you very much, guys. Thank you so much, Kabir, and thank you so much to our lovely audience. Please show some love for the webinar. It was an amazing webinar, and can we thank Kabir for being such a great speaker and host today. Thank you, guys. There are great comments. Abhi, I think Kabir आपने बोल दिया आप कहीं जा रहे हो ना. People are going to keep guessing where you are going. नहीं मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ. It's just that I'm going to stop creating content and I'm going to move on to new avenues. I just want to do something new in life now. That's about it. And we all hope the entire community and Petpooja's team can be there with you in all the way possible. I'll not stop spamming with that. Stop it. It's okay. No, you can absolutely do it. It's all right. It's your community too. And thank you so much to Kabir and Asta and the entire team, and to our lovely audience. It's not a farewell, guys. Let's not hope it's a farewell. He's there in the industry, he's there, probably doing amazing things that we all need now. After 1 year, everything after 1 year. I'll be surprised if someone starts putting like spamming different comments. क्यों मुझे थोड़े DMs आ रहे हैं अभी Kabir. Very those to you now about you. Sorry? I got some DMs while I was taking the webinar about you only. So I'm going to send it to you in case you want to get in touch. शादी कर रहे हो? नहीं यार शादी नहीं कर रहा. अच्छा okay, actually genuinely मैं बता देता हूँ क्या है. It is basically that I want to do, so the next restaurant that I want to open is basically focused on fixing a problem. Okay, what I've realized is that 33%, मेरे को भी किसी ने recently कुछ time पहले ये बताया था, 33% of the food that is produced in this country is wasted. Yet people sleep hungry. मतलब sleep hungry क्या, लोग मर रहे हैं खाना ना खाने की वजह से. बट 33% खाना बर्बाद हो जाता है. इसका मतलब ये है कि जो अगर 1000 टन गेहूं उग रही है, उसमें 333 टन सिर्फ खराब हो रही है. खराब मतलब फेंकी जा रही है, कहीं पे गिर गई, खराब हो गई, कुछ भी सड़ गई. आई वॉन्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. और मुझे लगता है इस प्रॉब्लम को ठीक करना, आप, बिकॉज यू गाइस हैव गिवन मी सो मच लव, I have some avenues which have opened up through which I can address this problem. I think I'm going to do that next, and I think कहीं जाने के लिए कहीं से निकलना जरूरी है. So I will not be creating content anymore. कुछ वक्त बाद I will hopefully come back, and what I want to definitely do is there will be a lot of entrepreneurs who I will be getting in touch with, who I will get in touch with. When I start this venture, I would like some of them to maybe join and come on board as operators in this system. That's all. That's all I can say for now. Thank you so much. That's a very great thought. And आपको अभी से volunteers चाहिए, तो I can see a lot of people would love to be there with you. In good time. I just got a little bit emotional and an adrenaline rush, which is why I said मैं इसके बारे में कुछ बोलना भी नहीं चाहता था, but in good time I'll reach out to more people. Thank you so much, guys. Thank you so much, Kabir. Next time. Absolutely. Until next time. Have a great day, and thank you so much to our audience